नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। कैसे हैं आप लोग? और आज इस स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ एक एक महिला से, जो कि यदि आप ट्विटर पे हैं ना, तो आप उनको अच्छे से जानते हो, क्योंकि वो एक पूरे कबाल से या फिर एक पूरी लॉबी से अकेले लोहा लेने के लिए जानी जाती हैं। और उनका नाम है नुपुर शर्मा, जो कि ऑप इंडिया नाम की जो वेबसाइट है उसको चलाती हैं। और just give me a minute. I think it is my voice is echoing. Nupur, can you please mute your yeah. So it is now okay. So Nupur, first of all, welcome to AKTK Podcast. और कैसी हैं आप? Yes, am I audible? Yes. All right, great. I'm great. Thank you so much for having me on your show. I'm very excited. Yes. Am I audible? Yes. Why the audio is having some kind of echo, but anyhow, when I am speaking you can mute yourself, and when you are speaking I'll mute myself. So Nupur, मैं start करना चाहूँगा because you must be knowing कि किस प्रकार से कश्मीर फाइल्स जिस समय रिलीज हुई थी, your website has covered this particular topic in a great way. किस प्रकार से उस समय भी एनडीटीवी जैसी जो एनडीटीवी की वेबसाइट पर कई महीने पहले ही इस फिल्म को एक प्रोपागेंडा बोल दिया गया था, और वो एक तरीके से पूरी तरीके से धराशायी हो गया था, क्योंकि बिकॉज द फिल्म बिकेम ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और आई थिंक लोग पूरा एक समाज के रूप में जा रहे थे, पूरी कॉलोनीज जा रही थी लोगों की इस फिल्म को देखने के लिए। तो am I audible, Nupur? Okay. Nupur, am I audible? Okay. My question is that किस तरीके से वो पूरा प्रोपेगेंडा जो था वो धराशायी हो गया था उस समय, बट आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म करीब कई महीने हो चुके हैं फिल्म को रिलीज हुए, हिट हुए भी, अब वो ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है। उसके बाद एक फिल्म फेस्टिवल में, जो कि एक तरीके से सरकार जिसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट जिसमें इन्वॉल्व है, उस फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक बंदा आता है इजराइल से, और वो ज्यूरी के रूप में आता है। वो बोलता है कि भाई ये तो एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। सो व्हाट डू यू थिंक के अभी कल हमने भी कवरेज की थी इस पूरे इशू पर कि वी वर एक्सप्लेनिंग के फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है भाई वो गलत नहीं है। सो ये बार बार कौन लोग हैं जो उठकर आ जाते हैं और ये सारा शुरू कर देते हैं चीजें? गलत नहीं है। So, Kashmir Files जो movie है, I don't think it's being vilified because of the movie or because of the director per se. It's being vilified because I think that for the very first time, जो film industry है, उसमें से एक ऐसा movie निकला है which truly represents the genocide and persecution of Hindus. If you remember Barkha Dutt, she was talking to a Kashmiri stone pelter once on NDTV. And the stone pelter was injured because of pellet guns and he was lying on the bed. And उनसे पूछा गया था कि आप ये सब क्यों करते हैं? And his answer was कि मैं इस्लाम के लिए करता हूँ. And बरखा तस्ले नहीं आप कश्मीर के लिए कर रहे हैं. Right. So you have to realize that Kashmir is one of the only Muslim majority states of India. And it has to be projected in good light by the left and Islamist nexus. Because अगर आप कश्मीर की सच्चाई दिखा देंगे तो ये पूरी कंट्री को और सारे हिंदुओं को समझ में आ जाएगा what really happens when the Muslim community becomes a majority in a state. What really happens when they start getting power in their hands. The root cause of the Kashmiri problem will be very clear as a problem of religion,
a problem of Islam when in Right. majority, and not a territorial dispute as the global media or the Hmm. leftists or the Islamists want to project it. और वो जो बरखा दत्त का बाइट था ना कि हम इस्लाम के लिए नहीं कश्मीर के लिए कर रहे हैं, कश्मीर के लिए। that was actually very telling of the agenda of the left. They want to ensure कि हिंदुओं को ये समझ में ना आए कि ये कश्मीर का जितना भी प्रॉब्लम है, at the very foundation of it, at the very root of it, is the problem of Islam, is the problem of uh, an निज़ाम ideology. मुस्तफ़ा। Absolutely. It's a problem of an ideology that believes in supremacy and it believes in the subjugation of non-Muslims. आप अगर ये हुँ, लोगों को समझ में आने लग जाएगा और अगर कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ 90 में वो समझ में आने लग जाएगा, तो हिंदुओं को ये भी समझ में आने लग जाएगा कि इस्लाम का मकसद है भारत को दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम बनाना, इस्लाम जैसे उन्होंने बनाना। राइट। कश्मीर में बनाया. So I जी। think the purpose of whitewashing the Hindu genocide in Kashmir by the Islamists, by the Kashmiri Muslim, is not for the sake of Kashmir. It's for the sake of the fact that Hindus must not awaken to the fact that the problem at the very heart of it is a problem of Islam, it's a problem of Ummah, and it's a problem of the very ideology that drives this sort of violence against non Muslims. ओके। जो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। बेसिकली ये इंसिडेंट जिसकी नुपुर ने बात की है वो आई थिंक जब पैलेट गन्स का एक इश्यू चलाया हुआ था, तो वो पैलेट गन्स के इश्यू को कवर करने बरखा दत्त वहाँ पर गई थी। वहाँ पर एक आम आदमी जिसको एक एवरेज पत्थर थ्रोअर आप बोल सकते हैं, स्टोन पेल्टर बोल सकते हैं, उस बंदे ने ये बात कही थी कि भाई मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ। बरखा दत्त कह रही थी कि नहीं आप कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। उसने कहा नहीं मैं इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लड़ रहा हूँ। उसने फिर से ये कहा था। बट इस इशू को एकेटीके के एक वीडियो में हमने कवर किया था। अब देखिए इसमें एक एवरेज नॉर्मल पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति जो खाता कमाता भी होगा, जॉब भी कर रहा था, उसकी ये आइडियोलॉजी है। एक टेररिस्ट जैसे कि बुरहान वानी था, उसकी क्या आइडियोलॉजी थी? उसके वो गाना गाते हुए उसके वायरल वीडियोस हैं जिसमें बोलता है सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, जंग हमारी जारी है, कश्मीर से आज तो बस कश्मीर हिलेंगे, कल दिल्ली की बारी है। सो वहां पर ये चीज समझ आ जाती है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट कश्मीर, जो जैसा कि आपने बोला वो आगे की तैयारी है। उसके बाद वो आगे बोलता है कि लाल किले पर सब्ज़े इलाही परचम ही लहराएंगे, तो वहां पर भी हरा झंडा लहरानी। तो दिस इज ऑल अबाउट जिसको हम निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे जो कश्मीर में लगे थे उस बारे में है। और इसी प्रकार की और चीजें ना आप एक और वीडियो है इसी प्रकार से जिसमें पुलिस वाले आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक नॉर्मल कश्मीरी के घर जाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका बेटा कहाँ है, बहुत दिनों से मिसिंग है, उसके बारे में कुछ वो माँ बाप उसे बोल रहे होते हैं कि आपको कुछ नहीं बताने वाले, हमारा बेटा तो इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बेटा। तो इट इज ऑल अबाउट दैट ओनली। सो ग्रेट कवरेज। बट अभी क्या हुआ देखिए, दोबारा से इन्होंने प्रोपेगेंडा बोल दिया फिल्म को, है ना प्रोपेगेंडा बोल दिया। उसके बाद वो पूरा का पूरा कबाल जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा कबाल लग गया उसको एम्पलीफाई करने में। फ्रॉम दिस स्वरा भास्कर से लेकर रोहिणी सिंह से लेकर एवरी डैम पर्सन इन दैट कबाल, उसने उसको एम्पलीफाई किया है, राइट। और एक एक एम्पलीफिकेशन का भी एक तरीका होता है जो कि आई थिंक इन लोगों से सीखना चाहिए हम लोगों को। वो एम्पलीफाई इस तरीके से करते हैं कि उसका एक ह्यूज इंपैक्ट होता है। आई थिंक पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है इन लोगों ने क्या कर रखा है, तो उसका एक ह्यूज इंपैक्ट वो क्रिएट करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए उसका असर क्या होता है। हम लोगों ने कल अपने चैनल पर एक वीडियो बनाकर लोगों को ये बताने का प्रयास किया है दैट व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, और या फिर कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है वो ट्रूथ है, राइट। हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है आज भी, राइट। ऑफ इंडिया में भी आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, ऑफ इंडिया में भी ये लिखा गया है। डू यू थिंक इस पूरे मुद्दे पर बहुत
वाइडली स्प्रेड बुक्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या फिर और जो मटेरियल होता है वो नहीं है? क्यों हमें एक्सप्लेन करने की आज भी जरूरत पड़ रही है कि भाई ये सच है? यू नो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन से हिंदू जेनोसाइड के ऊपर आपके पास बहुत सारा लिटरेचर है. Whether it was the Malabar genocide of Hindus, whether it was the direct action day, whether the n number of genocides that have happened. कौन से हम्म। जेनोसाइड के ऊपर हमारे पास किताबें हैं या बहुत ज्यादा लिटरेचर है या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है? मलाबार जेनोसाइड ऑफ हिंदूज के बारे में आप एक सर्वे करिए रास्ते पे निकलकर नहीं पता कि कितने किसी को हिंदुओं नहीं को पता। पता है. नहीं नोबडी पता. नोज और ये ना। क्यों नहीं पता है? तो आप जब आपको अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो 90 में जहां पे द इंटायर मीडिया वाज सोल्ड टू द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, द इंटायर मीडिया वाज सोल्ड टू द आइडिया ऑफ द फैक्ट दैट नहीं, ये जिहाद नहीं कर रहे हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने they're fighting for their own land, so to speak. The whole media was sold to the idea. तो इस सब्जेक्ट पे कितनी आवाजें उठी होगी और कितना कुछ लिखा गया होगा. And I think the root cause of this problem is very historical and very theological and very practical as well. आप अगर देखेंगे तो एक लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का, मैं इस्लामिस्ट भी नहीं कहूंगी, मैं मुस्लिम कहूंगी, there is a global nexus because Muslims work on the concept of ummah, right? So anywhere where there is a Muslim population, that becomes their extended nation. And any place where there is a non-Muslim population, वो चाहते हैं कि उसको इस्लामिक नेशन में बदल के वो उनका तब नेशन होगा. It's the basic concept of बेसिक, ummah. राइट. The leftists also have a global nexus. आप देखिए यहाँ के जो leftists हैं, they are far more loyal to the idea of China. We've seen that during the China War. We've seen that during the Indo-China War. Right. Because they believe that there is their ideological homeland. लेकिन हिंदू जो है वो इसी धरती के हैं और हमारे लिए कोई ग्लोबल नेक्सस हो भी नहीं सकता, कोई ग्लोबल अलायंस हो भी नहीं सकता, बिकॉज द राइट विंग ऑफ द यूएस is very different from the indigenous Hindu alliance of India. Because the right wing will be, traditional Christians. Hindus will also have a problem of traditional Christianity because as Islam, it is a monotheistic religion. वो भी आपको subjugate करना चाहेगा. So Hindus are standing all by themselves. And therefore, it is very difficult for Hindus to create a global narrative about their persecution because we have absolutely no allies in the world. We are all by ourselves. And the problem also starts from our historical political leaders who have essentially told us कि अगर हम मारे जा रहे हैं, अगर हमारा कत्ल हो रहा है, अगर हमारा रेप हो रहा है, अगर हम फोर्सफुली कन्वर्ट हो रहे हैं, तो शायद वो इसीलिए है क्योंकि हम मुसलमानों को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि वो हमारे भाई हैं. And this is something that Mahatma Gandhi, Mr. Mohandas Karamchand Gandhi, had said during the Malabar genocide of Hindus. Right. That if you're being killed, it's because perhaps you could not convince the Musalman that they are your brothers, and therefore this is the sacrifice that you must make and atone for your sins. I'm paraphrasing, of course. So Hindus have historically been told that if we are being persecuted, it is our fault. It is our fault that we did not bend to the whims of Islam. It is our fault कि हम हंसते हंसते उनको अपनी जमीन, अपने पैसे, अपनी औरतें नहीं दिए. तो अगर आपके generational trauma ये है that you have A, been raped and murdered and massacred, B, you have been told that your own persecution and your own rape and murder and your genocide and your persecution and your forceful conversion is your fault. And therefore, you must keep quiet because otherwise दुनिया को ये पता चल जाएगा कि आपने क्या गलतियां की है जिसके वजह से आप मारे जा रहे हैं. And this generational trauma and this generational brainwashing has led us to a space जहाँ पे हमको खुद के persecution का कोई आइडिया नहीं है. Nobody knows what direct action day was. Nobody knows what the Malabar genocide of Hindu was. Nobody knows कि महाशय राजपाल क्यों मारे गए थे, रंगीला रसूल क्यों पब्लिश हुई थी. कितने लोगों को पता है that रंगीला रसूल was published after the Muslims published 2 books inciting Hindu gods and goddesses. Yeah.
Exactly. Yeah. How many people know about that? How many people know that 295A came because of Rangila Rasool after Mahashay Mm. Rajpal was murdered? कोहत राइट्स के बारे में कितनों को पता है कि Nobody knows. मॉस्क से मुसलमान ने हिंदुओं को इंसल्ट किया और हिंदू ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने हजारों की तादाद में हिंदुओं को जला के मार डाला, उनके घर जला के खाक कर दिए. Delhi riots. The global narrative is that it was an anti-Muslim pogrom. Right. That's how Right. powerful the nexus is. तो बिल्कुल. कश्मीरी हिंदूज का तो हमें और आपको we should not be shocked at all that it is so easy for them to paint it as something where Hindus just up and left. जब ये मूवी रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स, Anupama Chopra's website had written Yeah. a review of the movie where they said that they turned a simple exodus of the people into a Mm. genocide. Shame. And you wonder how many dead bodies of Hindus do they have to see to be convinced that it was a legitimate genocide, where the Muslim population of Kashmir decided that the Hindus either have to convert or have to leave or have to die. Raliv, Galiv, Chaliv. Right. ये कब उनको समझ में आएगा और कब हमारे हिंदुओं को समझ में आएगा स्पेसिफिकली. And it's very difficult because we have no global nexus, we have no machinery to spread our message. And the moment Vivek Agnihotri came up with a movie that became so popular globally that it Mm. told the tale of our own persecution, they could not handle Mm. it and therefore they have to vilify it. Yeah. So you raised a great point जिसमें अगर हम देखिए, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं या नैरेटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल नैरेटिव जिसको हम बहुत स्ट्रांग बोल रहे हैं, एक समय पे वो ज्यूस के पास भी नहीं था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने किस तरीके से दे बिल्ड अ नेशन, अ स्मॉल टाइनी नेशन, दे बिल्ड अ नेशन. बट अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो एवरी नाउ एंड देन दे आर मेकिंग अ फिल्म, दे आर मेकिंग अ दे आर मेकिंग सम वंडरफुल फिल्म्स जिनकी आप IMDb रेटिंग्स देखते हो तो 8-9 इस टाइप से, शिंडलर्स लिस्ट, पियानिस्ट, आई थिंक यूरोपा, इस टाइप की बहुत सारी फिल्में, एंड देर अवेलेबल इन एवरी डैम लैंग्वेज. पूरी यूरोपियन लैंग्वेजेस में है, अंग्रेजी में है, आपको किसी भी लैंग्वेज में वो मिल जाएंगी. So they have also built a narrative. They have they have Spielbergs at their sides. उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देखिए, दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है जिसमें डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं. उनके पास एक नंबर भी है दैट हमारे 60 लाख लोग मार दिए यार. दे हैव देयर नेम्स एंड एवरीथिंग, दे हैव एवरीथिंग. उसके बाद अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो गिनती नहीं कर सकते आप इस मुद्दे पर कितनी किताबें हैं, जूस के पोग्राम पर या फिर हॉलोकॉस्ट पर, गिनती नहीं कर सकते. और एवरी एंगल से है. एक छोटी सी स्टोरी है फॉर एग्जांपल, उस पे पूरी की पूरी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं. एंड नाउ दे आर मेकिंग फिल्म्स ऑन दो सब्जेक्ट्स. दैट बॉय इन ब्लैक पजामा था एक, या कौन सी फिल्म थी वो. सो दे आर डूइंग इट, दे आर मेकिंग अ नैरेटिव. उन्होंने भी बनाया है उस नैरेटिव को. व्हाई डू यू थिंक के हमारे लिए, या फिर अगर आज के डेट की मैं बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल विक्रम संपत राइट्स अ बुक, उनको डिमीन करने का प्रयास किया जाता है. ही हैज जस्ट रिटन अ बुक. ठीक है, आप बोलते हो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरीथिंग, तो भाई अगर उसमें कुछ गलत है तो उसका जवाब दीजिए ना. दे आर जस्ट डिमीनिंग हिम. देन ऑन द अदर साइड ऑड्रे टुश्की जो है वो औरंगजेब को अपना बाप मान के बैठी हुई है. सॉरी टू यूज दोस वर्ड्स, बट मैं बस यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब जूस, जो कि एक they're running a small country, they have made a narrative, why can't we make it? I Nupur, think, Nupur, एक yeah, सेकंड, एक सेकंड, एक हाँ सेकंड. जी, आई थिंक हाँ जी. ऑन योर पीसी, हाँ राइट राइट, यही मैं कहना चाह रहा था. किसी टैब पर वो चल रहा है तो वो एको हो रहा है. सो नाउ इट विल बी अ स्मूथ कॉन्वर्सेशन, राइट? या, प्लीज गो अहेड. थैंक यू. Is it all right now?
No, it is I'm not not okay. sure why there is an echo. I'm really not sure. एक्चुअली आई थिंक ये आपके पीसी में कोई टैब है जिसमें वो वीडियो चल रहा है. इज इट? एक बार चेक कर लीजिए. I am just पीसी gonna में कोई check. टैब ओपन है यूट्यूब का जिसमें ये पर्टिकुलर वीडियो स्ट्रीम हो रहा है. I'm not very sure. Is it better now? नाउ इट इज ओके. I ट्राई. think, okay, okay, या okay, इट इज great. ओके नाउ. I think my tweet was open, so maybe it started ओके ओके. मे बी streaming in दैट a. वे. राइट 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 राइट. या. So I think for a people to be taken seriously globally, they have to हम्म. stand up and say, I am. They have to stand up and हम्म. claim that they have a right to exist. या. And we get the kind of leaders we deserve. From the very beginning, our leaders themselves have denied our own persecution. How many Jewish leaders and how many Jewish politicians today will stand up in Israel and say that the Holocaust did not happen? हम्म. He's going to दे be विल lynched. जेल. या. They'll be jailed. He's going बिल्कुल. to be lynched. There's a Holocaust denial law हम्म. in, I think, 18 countries across the world. राइट. 18 Why was कंट्रीज. that possible? Why was that possible? Because the Jews could स्टूड. create Israel, could say that this is the natural home for Jews from across the globe. Today, are Hindus able to say that? Can you and नो. I confidently say that India is a natural home for Hindus? You and I can say it, but legally हम्म. and policy wise, is it a reality? It's नो. not. नो. We can't claim our own homeland. We can't claim our own temples. We have our own politicians who are denying the genocide of our own people. We have our own historians twisting history. We have our हम्म. own media saying that the genocide did not happen. We have a Barkhadat saying that the Hindus are being driven out of Kashmir because they had economically better opportunities राइट. and the Muslims felt marginalized. Which हम्म. leader, whether it was the BJP, whether it's the Congress, whether it's PDP, any party, national party in today's India, has stood up and said that the problem of Kashmir is Islam and the problem of Kashmir is not territorial? We are a people who are so neutered because of our historical leaders that we don't हम्म. even have the courage to stand up and articulate what the root cause of the problem is. We don't even have the courage to articulate how our country is a civilizational state which existed much before the nation state, the political nation state was formed when we got independence from the Britishers. We have reduced Chhatrapati Shivaji Maharaj to a local लोकल. Maharashtrian leader राइट. instead of a leader who established Hindavi Swaraj. राइट. सो अगर आपके लोग इतने डिरैसिनेटेड है और अगर आपके लोग माफ करिएगा आपने जैसे बोला कि आई एम यू वर सॉरी टू यूज दैट वर्ड आई विल आल्सो बी सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट इफ वी आर सो impotent that we can't even stand up and declare our own homeland as our ancestral civilizational homeland as the Jews did, if you are not able to say that you kill one of ours and you will and we will wipe your civilization out. शत्रु बोध हिंदुओं में बहुत पहले से मारा हम्म. जा चुका है और जब तक शत्रु बोध नहीं आएगा तब तक we will not be able to tell the world how we were persecuted. So we have a long way to go to reach the level that Jews have reached as far as telling the world about their own persecution is concerned. We don't have any civil society organizations today that exclusively fight for the rights of Hindus or that exclusively say that we will talk about the genocide of Hindus. And anywhere where there is Hindu phobia, anywhere where there is Hindu misia, anywhere where हम्म. there is a denial of the genocide of Hindus, we will make sure that we lobby and make that individual organization or state retract those statements. So नो. the Jews या. could do it because, yeah, sorry, go on. नो प्लीज गो अहेड. प्लीज कंप्लीट योर स्टेटमेंट देन मैं No, अगला. I was saying the Jews could do it because they had the spine and they had the confidence to realize that if they don't do this, if they don't reclaim their homeland, and if they don't talk about their persecution globally, they are going to be persecuted again and they will not be given the right to survive. Unfortunately, Hindus are yet to realize that we are very close हम्म. to our end and we are probably documenting our own end as we speak, unless we take corrective measures.
ओके, देखिए अब मेरा ना एक थोड़ा ये लंबा हो सकता है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी कवर करने वाला हूँ जो आपकी वेबसाइट पे मैंने, बिकॉज ऑनेस्टली मेरा अपना एक पर्सनल, बिकॉज वी स्टार्टेड दिस चैनल इन आई थिंक 2018-19 के करीब करीब, राइट? सो उसमें क्या था, आई थिंक इलेक्शन से कुछ पहले। सो उससे पहले हमें एक तरफा ही चीजें पढ़ने में आती थी। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, एक तरफा ज्ञान हमारे दिमागों में छपा हुआ था। बुक्स पढ़ने का एक एक बहुत बड़ा कल्चर हमारे यहाँ पर था नहीं। मैं भी काफी बाद में ही मैंने पढ़ना शुरू किया। सो ऑप इंडिया केम इन आई थिंक 2015, राइट, अराउंड दैट टाइम। सो आई थिंक 2016 से आई थिंक हमने ऑप इंडिया को फॉलो करना शुरू किया। एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिमागों में जाना शुरू हुआ, और उसमें एक्चुअली में अच्छी चीज क्या होती थी, दैट ऑप इंडिया जैसी वेबसाइट्स जो थी, वो जो भी चीजें दे रही थी वो फैक्चुअली करेक्ट होती थी। हम उसको वेरीफाई ऑफ कोर्स करते ही थे। तो दिमाग में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जाना शुरू हुआ, और फिर जिसे कहते हैं ना, दो चीजें आपके दिमाग में जा रही हैं, तो आप एक करेक्ट राह पकड़ने के लायक बन सकते हो। अदरवाइज उससे पहले तो एक आपको रास्ता पकड़ा दिया गया, आप चले जा रहे हो भेड़ बकरियों की तरह। सो दिस हैपेंड विद अस थैंक्स टू ऑप इंडिया। बट उसके बाद मैं एक्चुअली मैं पूछना ये चाह रहा था कि देखिए, देर आर टू थिंग्स, देर इज वॉट अबाउटरी एंड देर इज फॉल्स इक्विवेलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने अभी ये बोले हैं। क्यों बोले हैं मैं आपको बताता हूं। मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मेरे यार दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ना आप फॉर एग्जांपल कोई एक्स चीज बोलोगे, दैट देखो इन्होंने ये कर दिया। दूसरी साइड से आर्ग्यूमेंट आएगा, तो इन्होंने भी तो ये कर दिया। अब क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल एक साइड मुस्लिम पक्ष से बोल रही है, एक साइड हिंदू पक्ष से बोल रही है, 25-25 एग्जाम्पल दोनों गिनवा देंगे, और सामने वाले को मैसेज जाएगा, यार 25-25 एग्जाम्पल गिनवा दिए, दोनों ही कर रहे हैं। तो सो आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो एंड अक्रॉस द कम्युनिटी। वो ये इस टाइप से करते हैं कि व्हाट अबाउट री, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये भी तो कर रहे हैं। एंड वो एक्चुअली में क्या होता है, वो फॉल्स इक्विवेलेंस होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जब हम कम्युनिटीज की बात करते हैं या फिर हम देशों की बात करते हैं, तो हमें बड़ा डेटा देखना पड़ता है। तो I made we make some special episodes of Red Files on our another channel। तो उसमें मैंने ये चीज कवर की थी कि जब हम यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस में 1% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बट जब हम यूएस के प्रिजन्स की बात करते हैं, तो यूएस के प्रिजन्स में जो पॉपुलेशन है, जो कैदी हैं, उनमें 9% मुस्लिम्स हैं। अपने जनसंख्या रेशियो से, अनुपात से 9 गुना अधिक क्राइम कोई कम्युनिटी कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम हिंदूज की बात कर रहे हैं, वहां पर तो 0.8% हिंदूज थे, 0.2% जेलों में है, अपने जनसंख्या अनुपात से 4 गुना कम। सिमिलरली अगर हम यूके की बात करते हैं, यूके में 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 18% क्राइम रेट है। हिंदूज का 364 कैदी थे, तो यूके की जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये डेटा है, उन्होंने उसको 0% लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज 0.0 समथिंग परसेंट, तो उसको 0% उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली इन फ्रांस में आप हैरान हो जाएंगी, बिकॉज फ्रांस क्या है, ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं करता है, बट देर आर ऑर्गेनाइजेशंस, देर आर मीडिया, देर आर थिंग्स। क्योंकि जेलों के अंदर क्या होता है ना कि कैदी डिमांड कर रहे होते हैं कि भाई मुझे रमजान मनाना है, मुझे नमाज पढ़नी है, मैं दिन में इतने बार नमाज पढ़ना चाहता हूं, उसके लिए अरेंज कीजिए। उससे डेटा निकाल कर उन्होंने क्या किया है, मैं आपको बताता हूं। फ्रांस में देर इज 8 to 9% मुस्लिम पॉपुलेशन, बट देर आर 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने ये निकाला दैट देर आर अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% people who are in jails are Muslims. Now these are shocking data. Similar data is coming from Germany. Similar data is in Italy. I think 3% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये 2018 का मैं आपको बता रहा हूं। 3% मुस्लिम पॉपुलेशन, 32% in jails.
दिस इज दिस टेल्स अ होल स्टोरी कि यार देर इज समथिंग रॉन्ग विद द आइडियोलॉजी. जिस आइडियोलॉजी को आप मान रहे हैं वो क्रिमिनल्स बना रही है किसी ना किसी रूप में. एंड दिस इज काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन. क्योंकि रेडिकल जो होता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि वो रेडिकल है. उसको लग रहा होता है वो सही है. और वो रेडिकलाइजेशन जो उसके दिमाग में है वो उससे सब कुछ करवा रही है. वो बोल रहा है ना कि भाई बरखादत को कह रहा है भाई मैं तो इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ. बरखादत को पता है यार ये तो भाई ऐसी तैसी कराएगा मेरी, तो उसको चेंज करती है. सो दिस इज what radicalization does to your mind. Now when we look at the bigger numbers, तो whataboutery भी नहीं आती. आप ये नहीं बोल सकते कि यार हिंदू भी तो कर रहे हैं. हिंदूज आर डूइंग मच लेसर. ऑफ कोर्स क्रिमिनल्स हर कम्युनिटी में है, राइट, बट हिंदूज आर डूइंग इट मच लेसर. वो भाई सीईओज बन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के. जबकि मैं इधर देख रहा था, एक और डेटा मैं आपको बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ. यूके में जो पाकिस्तानी या फिर बांग्लादेशी या फिर और जो साउथ एशियन कम्युनिटी जहां पर रह रही है, ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में, ढाबे में और इस टाइप की होटल्स में इधर लगी हुई है. वहां पर हमारे लोग सीईओज बन रहे हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस. ये डिफरेंस जो होगा तब आप बड़ा डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा. अब मैं आ जाता हूं इसी क्वेश्चन पर कि ये अक्रॉस द कम्युनिटी मैंने ये देखा है कि फॉल्स इक्विवेलेंस और व्हाट अबाउटरी, ये दो चीजों पे आर्ग्यूमेंट होते हैं. हाउ कैन वी एज अ इन्फ्लुएंसर्स हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं अपने चैनल्स के थ्रू या अपनी वेबसाइट के थ्रू. हाउ कैन वी मेक दिस नैरेटिव स्टैंड अप कि यार आप व्हाट अबाउटरी कर रहे हो, आप फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो, दोनों बराबर नहीं है. ये नैरेटिव कैसे हम खड़ा कर सकते हैं? सी फर्स्टली मुझे ये रेडिकलाइजेशन वाले आर्ग्यूमेंट से ही प्रॉब्लम है. ओके. Because Islam is Islam. There is no Indian variant of Islam and ऑफ Afghanistan कोर्स, ऑफ variant of कोर्स. Islam and US variant of Islam, right? एग्री, एग्री. So I think Osama bin Laden or the Caliph, the Caliph in ISIS or the Taliban, they are examples of good Muslims. Why are they examples of good Muslims? Is because they are following their faith to the T and to the letter. So, a Muslim who is a so called moderate Muslim, who is discarding the violent verses in their religious text, and these violent verses have been pointed out by a Muslim himself, who is now a Hindu, but by a Muslim himself. 26 verses, वो quote भी गए थे उसको लेकर कि इन verses को आप राइट, delete करिए. राइट, So राइट, now, राइट. if somebody is a so-called moderate Muslim who is not following those 26 verses of the Quran, then essentially he's a bad Muslim because he's not following his religious text. So there is no radicalization because there is no variant of Islam. Islam is Islam, the text is the text, and it says what it does without getting into an argument about theology. Now, when we talk about absolute numbers, that Hindu jails may come hai or Musalman zyada hai. Now, that in itself is a bit of a fallacious argument. ओके. Hindus, let's talk about India. We don't have religious statistics as far as how many Hindus or Muslims are in jail. What we need to see is the nature of crimes for which certain religious sections are in jail. अगर हजार पॉकेट मार, अगर हजार पिक पॉकेटर्स आर हिंदूज हु आर लैंग्विशिंग इन जेल versus 20 Muslims who are in jail for terrorist, ISIS, Al Qaeda, bombing, that those sort of crimes, religious terrorism sort of crimes. आप किसके क्राइम को बड़ा मानेंगे? 1000 पिक पॉकेटर्स को या 20 टेररिस्ट्स को? Of course, beef starter. So when you look at absolute numbers, you miss the nature of crime that we should be focusing on. If there are more Christians in jail in a Christian country, that's a number game. Of course, there are going to be more Christians in jail. Nobody said that Hindus don't commit crimes. Nobody said that But Christians don't commit crimes. Yeah. but Nupur, the point is that even in the Christian countries, Muslims are filling the jails. This No, is no, the I point. agree. Yeah. No, I agree. But instead of looking at those numbers, I personally believe that we need to collect data on the number of people in jails for specific crimes.
अगर ओके 1000 मुस्लिम जेल में हैं और 1000 हिंदू जेल में हैं, 1000 वर्सेस 1000 में कितने पेटी क्राइम्स के लिए हैं, कितने मर्डर्स और रेप्स के लिए हैं एक तरफ, एग्री कितने religiously motivated crimes के लिए हैं, whether it's changing your name, pretending to be a Hindu, you know, and forcefully converting Hindu girls or Christian girls or Sikh girls, whether राइट it is terrorism related crimes, whether it's links to Al Qaeda, ISIS, all of these crimes. You have to compare the nature of crimes. Apple to apple comparison ये होगा कि आप nature of बिल्कुल crimes को you know कंपेयर करिए और तब आपको पता चलेगा कि कौन सी कम्युनिटी वर्ल्ड ओवर is far more involved in religiously motivated hate crimes against non-Hindus. And then a pattern will emerge. I don't believe that absolute numbers, I mean, even though the absolute numbers are telling and evidence in themselves, but I still don't think that absolute numbers prove that a community is more predisposed to religiously motivated violence. Because देखिए हिंदू भी रेप करता है, मुसलमान भी रेप करता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल क्रिश्चियन भी रेप करता है, राइट? मर्डर सब करते हैं. क्राइम इज transcends religion and transcends caste and transcends creed and transcends economic strata as well. But our problem is religiously motivated crimes. Therefore, you can't compare numbers to number. You have to compare nature of crime to nature of crime. And I can confidently say that राइट world over, if you're talking about religiously motivated hate crimes, world over, the Muslim community is going to be at the forefront without any question. And which is why they want to compare the numbers. कि अरे अब जैसे एक हिंदू ने आफ्ताब ने श्रद्धा को काट के फेंक दिया. राइट The moment a Hindu commits a similar crime, they are going to say, look, you were wrong राइट to point out बिल्कुल Aftab's religion. A Hindu has done the same thing. राइट But nobody denied that Hindus commit crimes. The problem is बिल्कुल that a Hindu is not going to go and say कि मुझे आप मार भी दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जन्नत में हूर मिलेगी. The problem is कि राइट हिंदू मुसलमान औरत को ये जाके नहीं बोलेगा कि मेरा नाम आफ्ताब है, मुझसे शादी करो, और फिर उसको फोर्सफुली धर्म परिवर्तन कराएगा. How many cases have you seen where a Hindu man pretends to be a Muslim man to trap a Hindu woman, Muslim woman, and then forcefully converts her to Hinduism? You haven't. We've बिल्कुल seen even our Hindu boys being murdered when they date Muslim girls. राइट सो आई थिंक ये जो इनका आर्ग्यूमेंट है ना कि मुसलमान ने बीवी को मार दिया ट्रिपल तलाक के लिए, या मुसलमान ने हिंदू लड़की को फोर्स फीड करा दिया बीफ और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक दिया. द मोमेंट अ हिंदू कमिट्स अ क्राइम दे लाइक लुक अ हिंदू हैज कमिटेड अ क्राइम, सो हाउ कैन यू नाउ से बिल्कुल दैट मुस्लिम्स आर अ टेरिबल कम्युनिटी. And to counter this argument, we have to look at the nature of crimes for which criminals are in jail instead of absolute numbers, because absolute numbers don't prove anything. Crime transcends religion. Religiously motivated hate crime is a very specific uh, characteristic of the Islamic community. And that we can prove only when we look at the nature of crimes and the number of crimes which are committed, which are religiously motivated against या non Muslims. या बट एक्चुअली दीज नंबर्स आर नॉट अवेलेबल. सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए अगर मैं 2014 की बात करता हूँ, 2014 से पहले मैं पॉलिटिकल यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को लाना चाहूंगा कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज 2014 से पहले जो मेरा मूल्यांकन है उसके हिसाब से बीजेपी एंड मिस्टर मोदी, इनका बहुत बहुत बड़ा वर्चस्व था सोशल मीडिया पर, राइट? बट 2014 के बाद जो मैंने देखा, देयर आर फैक्ट चेकर्स हु आर ऑन सम अदर साइड, देयर आर डेटा वेबसाइट्स जैसे कि इंडिया स्पैन हो गई, वो भी दूसरी साइड है. देयर आर यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके वीडियोस जो हैं वो ब्लॉक नहीं किए जाते, शैडो बैन नहीं किए जाते, और वो दूसरी साइड से एवरी. एंड देयर इज ऑप इंडिया, जो कि अकेली एक वेबसाइट जिसको मैं मानता हूं, जो कि विच इज डूइंग समथिंग सब्सटेंशियल, जिसको जिससे सबकी, माफ कीजिएगा मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, फटती है. सो द पॉइंट इज कि दिस इज बिकॉज वो पीछे रह गए थे इस पूरे इकोसिस्टम को बनाने में, वो पीछे थे. बट आज की डेट में
एक पर्टिकुलर कोई चीज उन्हें उठानी है। अभी जैसे रवीश का ही मुद्दा ले लीजिए आप, रवीश का मुद्दा आप देखिए, उसने रिजाइन किया है एंड उसने उन लोगों ने उसको भीष्म पितामह बनाने की पूरा प्रयास कर दिया है कि क्या त्यागी आदमी, क्या बलिदानी आदमी। एंड अभी वो इतना एम्पलीफाई उस चीज को कर देते हैं दैट पीपल लाइक अस, हम उसको कवर कर रहे हैं आज कि यार नहीं ऐसा भी नहीं है, भीष्म पितामह नहीं है, ठीक है। अपने हिसाब से वो अपना काम कर रहा है, भीष्म पितामह नहीं है। बट सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि देखिए एक इकोसिस्टम उन्होंने बाद में बनाना शुरू किया और वो उसमें बहुत आगे निकल गए। देयर आर फैक्ट चेकर्स, देयर आर डेटा एनालिस्ट, देयर आर यूट्यूबर्स, देयर आर सो मैनी डिजिटल वेबसाइट्स। एक ऑप इंडिया इज देयर, बट दूसरी साइड तो देखिए, आपसे मुझसे ज्यादा आपको पता होगा कि आप कैसे उन सबको काउंटर करते हैं। मैं तो हंसता हूँ इस चीज को देख कर के जब ये आप ये क्या नाम है जुबैर के लिए जो ऑल्ट न्यूज के लिए जो किस तरह क्या वर्ड यूज करते हो आप, प्रोपेगेंडा वेबसाइट या क्या, और वो देयर इज अ काइंड ऑफ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन ऑप इंडिया एंड मैनी अदर्स। सो दिस फैसिनेट्स मी दैट कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकेली लोहा लेती हैं, आपने इनका जीना हराम किया हुआ है। ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा ये बात, आपने इनका जीना हराम किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मुझे बताइएगा कि ये करेज कहाँ से आती है, ये स्टैंड लेने की करेज कहाँ से आती है। और दूसरी चीज, जो इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया वो आगे निकल गए उस चीज में। ये साइड इकोसिस्टम, इंडिक साइड जिसको हम बोलते हैं, इंडिक साइड ये इकोसिस्टम कैसे बना सकती है? First of all, cheers to what you said. I kept this mug specifically when you bring up Op India. uh, as far as courage is concerned, frankly, मुझे और ज़्यादा डर लगने लगता है when somebody asks me कि courage कहाँ से आता है, because I didn't know when I took this job up. मुझे नहीं पता था कि मुझे courage की ज़रूरत पड़ेगी. I frankly took this job up because I Of loved course. writing, and I loved talking about issues. I loved writing. I had no, मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था journalism से. And अच्छा। one fine day, Rahul Roshan just called me. I was happily running my business in Calcutta. And one fine day, Rahul Roshan called me and said, "Do you want to run Op India as the editor?" And I said, "I have no idea. I don't know हम्म about I don't know anything about digital publication." And he's like, "वो हम्म सब हो जाएगा, but do you want to do it?" And within 24 hours, much to the dismay of my father, I dropped my business and I started working with Op India. So I didn't know I will need courage. I had no idea that this will be a stream where we'll be met with so many challenges. I didn't हम्म know that we'll grow so much in 5 years either. So courage kahan se aata hai? I really don't know. When the Bengal issue happened, the only thought in my head was I don't want to, even if there are 5 people who think that they get strength to talk about Hindus because of me not backing down, even if there are just 5 people, हम्म then it's my moral responsibility to make sure that I don't back down. Because अगर 5 लोग भी ऐसा बोले ना कि अगर नुपुर चुप हो गई या ऑप इंडिया चुप हो गया तो हमारी क्या, हमारा क्या जगह है, हम तो चुप बैठ ही जाते हैं वरना हमारे पीछे भी लोग आएंगे. That would हम्म be one of our biggest, that would be something that I would personally never recover from, because I would have let down those 5 people who are finding their हम्म voice because of me, even if there are 5 people. So it's not about courage. You take one day at a time. You just have to be insanely stubborn. तो courage तो बाद में आता है. I think it's more about stubbornness. It's more about राइट ego. कि if I back down, it'll hurt my ego. If I back down, हम्म I'm just too stubborn to back down. So I don't think it's about courage. I think it's about ego and stubbornness. And वो मेरे पास भर भर के है. So I think my stubbornness helps me go on. और जब As ये far as the, एक सेकंड, yeah, या जो ये बंगाल का इशू में आपने बंगाल के बारे में बताया दैट आई थिंक यू लिव इन दिल्ली नाउ, राइट? yes, सो I live in ये Delhi. ये थोड़ा सा इंसिडेंट, बिकॉज आपके बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए कि बंगाल से दिल्ली का सफर क्यों और कैसे हुआ था? पीपल वुड लव टू नो दिस थिंग। So it was peak COVID. I think it was May or June 2020 when it was peak COVID, the हम्म first wave. And I suddenly got a
summons from my local police station in पुलिस. Calcutta. Actually, my husband got a summons from the local Yeah. police station in Calcutta. Hmm. And when my husband got the summons, मैं उसको देख रही हूँ ऐसे तुमने क्या कर दिया तुम तो you're the most non-controversial person. I said what the hell did you do? ऐसे तुमने किसी को मार दिया पीट दिया कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हुआ क्या and we हाँ. couldn't figure it out because my husband is the most non-controversial easygoing person in the world. Hmm. Next day when he goes there he is told that on the website मैंने एक नंबर लिया था जो मैंने वेबसाइट पे डाला था it was in his name. So they wanted certain articles pulled down. One was on something a BJP leader had said about TMC. Hmm. One was about one COVID related article that we had done. आपको याद होगा एक video was doing the rounds. Reports were doing the rounds that the Bengal government was dumping COVID dead bodies in Yeah. residential areas. Right. 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 So that report and a couple of more reports that we had covered about the violence in Bengal, the Hindu-Muslim violence. So they Hmm. wanted those articles to be pulled down and they somehow found a link to my husband. तो उनको threaten किया गया था कि you please tell your wife then to take these articles down, otherwise it will be problematic. वो जब तक आके मुझे इस बारे में बताए, by the night we got 2 more summons, this time from Lal Bazar, which is the police headquarters. And Hmm. we were summoned to the rowdy department of Lal Bazar, which basically deals with drug peddlers, smugglers, gangsters, etc. जी. So we went there. मेरी interrogation काफी घंटों तक चली. Thankfully, I was not arrested. And then I came back home. And मुझे ये बोला गया था that they are ready to arrest you, so you must leave town for a few days. तो मैं 3-4 दिन के लिए गई. मैं Supreme Court petition for a stay on the FIR was anyways pending. 3-4 दिन बाद मुझे अच्छा नहीं लगा because मैं अपनी बेटी से दूर थी and I thought that it's better to go to jail than stay away from my daughter because my daughter was only 4 years old at that time. Oh my So I God. came back to Calcutta. Thankfully, I was not arrested and the Supreme Court stayed the FIRs. So वहाँ का episode खत्म हो गया and I continue to live in Calcutta and work. Hmm. Then during the post-poll violence, a new FIR emerged, which was without any notification, without any information, without any reason, transferred to the CID. And we were Oh. summoned for interrogation again. And we got the information that they are ready to arrest us. And I also started getting a lot of threats from Okay. goons in West Bengal, in Calcutta, because this was the peak of the post poll violence. And I was sitting in Calcutta and we were covering the post poll violence. If you remember, there was this Hmm. one case of a girl who was raped by a gang of Muslims जो उसके घर में आए थे TMC guys and they had come to Hmm. our home and उसके father को gun point पे रख के they had gang raped her और जब उनके घर आए थे तो उन्होंने बोला था कि हमें हिंदू लड़कियां चाहिए. Now this I have her testimony on video and they were Okay. forcing her to leave BJP and join TMC, so on and so forth. So then the case was transferred to CID. The case was about the riot coverage that we had done and a couple of more reports, and they wanted us to pull that down, and we refused. Thankfully, eventually the Supreme Court quashed all the FIRs Hmm. against me and Rahul and Op India and everybody. But with the threats and with the constant FIRs, it became very difficult for me to stay in Calcutta because I have a very young daughter. Yeah. And despite my work and despite the nature of my work, I want to give her a stable environment. बिल्कुल. So Of I want course. her not to feel uncomfortable when Yeah. mama is in tension क्योंकि टेंशन हो जाता है जब इतने FIRs बिल्कुल. होते हैं समन्स आता है बिल्कुल. इंटेरोगेशन के लिए. So I Right. didn't want her to go through that emotional roller coaster. I did not want her to live under the shadow of me living under pressure, my husband living under pressure, that we are getting threats. Um, मेरी बेटी का भी नाम लिया गया इंटेरोगेशन के टाइम पे कि आपकी बेटी है उसका नाम सिया है. मेरे फादर को बोला गया कि इस उम्र में बिकॉज ही 70
तो मेरे फादर को बोला गया कि इस उम्र में आपको कैसा लगेगा कि आपके अगर बेटी और जमाई जेल में सड़ रहे होंगे तो आप कैसे संभालेंगे उनकी बेटी को जो 4 साल की. My So these God. things got a little too much. And I told you that it's not about courage, it's about stubbornness. So I was too stubborn to quit, and I was too stubborn to pull down those reports. And thankfully, my husband married me knowing fully well how stubborn I am. So he said that, Nupur, if you back down now, तो अभी जो दिक्कत होगा मूवमेंट टू मूव स्टेट्स वो तो होगा ही. But if you quit, then you will make your own life miserable because you're going to be Hmm. completely depressed and miserable, and you're going to make our Right. life miserable. So we may as well move and you continue your work. So that's how Hmm. I'm in Delhi because I'm too stubborn, and my husband and my father and my family respect that stubbornness of mine, thankfully. So एंड that's what लेडीज एंड happened in my जेंटलमैन, ये पूरी स्टोरी जो है ये किसी ने कवर नहीं की है. And this is happening to right, nobody covered it, right? I don't think so, no. Yeah. This is the Organizer truth. did. Organizer did Organizer. cover that I had left Calcutta. बट कोई भी Other एकाध than that, किसी ने कर ली होगी, राइट, किसी एकाध ने की होगी, बट किसी ने कवर नहीं की है. नोबडी नोज अबाउट दिस स्टोरी. सो स्पेसिफिकली मैंने ये जानने के लिए लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से कोई लड़ रहा है चीजों से और उसको झेलते हुए वो आगे बढ़ रहा है. एंड दिस इज समथिंग लाइक, आप केवल अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही हैं. देयर इज एक एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोगों का जिसके लिए आप स्टैंड लेती हैं, और वो आपके आर्टिकल्स पढ़ के फिर समाज में स्टैंड लेते हैं. दिस इज द होल ट्रूथ. आप जो I लिख hope रही that's हैं, true. दिस इज द ट्रूथ. मैं आपको बता रहा हूँ. मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, आज से कुछ समय पहले मैं ये काम नहीं करता था. मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत था. आई एम ऑल्सो लाइक, मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं है ऐसा, बस एक जबान चलाने की आदत है, वो चलाते हैं हम लोग. सो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था. वहां का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ दैट वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. बिकॉज क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी में जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वहां लोग खाली बैठे रहते हैं. तो वहां पे खाली बैठे बैठे या तो वो फिर यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. तो एक आर्ग्यूमेंट में देयर वाज, मुझे इशू याद नहीं, समथिंग ये भीमा कोरेगांव का कुछ इशू था उस समय. तो उस पर पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा था. नाउ एक बंदे ने आपका पूरा आर्टिकल ऑफ इंडिया का वहां पे सामने उल्टी कर दिया और उसने बताया कि दिस 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 दिस. मैंने पढ़ा नहीं था, बट जब मैं घर गया तो मैंने फिर देखा, यार ये तो सारा उसने ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है वो उसने वॉमिट किया हुआ है वहां पर. सो दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि लोग पढ़ते हैं. और मैं उस समय बिल्कुल, मेरा कोई प्रेजुडिस नहीं था, कोई पूर्वाग्रह नहीं था. एक जैसे नॉर्मल आम आदमी होता है वैसे ही मैं ऑफ इंडिया पढ़ता था, और उस तरीके से मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ. So this is how it is. And That last, makes me very proud. So that makes me very हाँ, proud. you should be. And I have repeated this that, we have made no qualms about it. We are an organization that supports Hindus and we support Hindutva. I am a person who will only talk about Hindus. And I've made no qualms about it. मैंने कभी ये नौटंकी नहीं किया है कि मैं न्यूट्रल हूँ, नहीं मैं सबके लिए बात करूंगी, नहीं. मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए बात करूंगी. If you like it, please read me. If you don't, don't. But Right. there is this thing attached saying that because we don't pretend to be neutral, people say that ये तो हिंदुओं की बात करेंगे, ये अगर कोई मुसलमान मर रहा है तो उसकी बात नहीं करेंगे. So I always tell people that if you are being stigmatized because you're sharing an Op India link, don't. But at least share our content. In the sense, read up and use those arguments in your conversations with people. Because I don't think Rahul or me or any of us are in this stream as a ग्लोइंग बिजनेस प्रोपोजिशन. क्योंकि हम होते तो मैं अभी लेफ्टिस्ट बन जाती, शायद मेरे भी 1-2 फार्म हाउस होते, मेरे 2 BHK अपार्टमेंट्स होते. यहाँ आई एम स्ट्रगलिंग टू पे रेंट. बट this is a stream where you don't really get much money, you don't get Money. fame, you don't get No. awards. आपकी पीठ थपथपाने कोई नहीं आने वाला except बिल्कुल, your बिल्कुल. readers.
But it is an important job, not just Op India, Swaraj, Hindu Post. There are so many YouTubers like yourself. Um, I think a lot of people have come into this stream, which is why it's becoming more and more easy to talk about these issues. And the Overton window is shifting a little bit every day towards the right, which is very important. राइट, ग्रेट। Yeah. सो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा पैसा छाप रहे हैं, बड़ा पैसा छाप रहे हैं। कोई पैसा नहीं छाप रहे भाई, बस अपनी दाल-रोटियाँ चलती हैं और कुछ नहीं है, ठीक है? सो ये एक झूठे भुलावे में आप लोग जी रहे हैं। 40-40 लाख लोग यूँ उठाते हैं एंड एनी हाउ मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन नुपुर आपसे ये रहेगा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है कि ऑप इंडिया का आप फ्यूचर क्या देखती हैं? लास्ट क्वेश्चन। वाओ, ये सवाल शायद राहुल से पूछना बेटर है बिकॉज ही इज द सीईओ। आई डोंट अंडरस्टैंड मनी वेरी वेल। आई वाज अ वेरी बैड बनिया। मेरे पापा ने तो बोल ही दिया है कि तुम बहुत फालतू बनिया हो, कोई पैसे वैसे तुम्हें समझ में नहीं आते। So I will talk about content wise where I see the future of Op India. जी, Hopefully you can get Rahul on your show and he can tell you organizationally where we see ourselves. बिल्कुल। Um, I personally feel that Op India is just one baby step towards creating our own narrative, towards talking about what we need to talk about. There is a lot more that needs to be done, specifically categorization of crimes against Hindus. For example, there should be a dedicated website, a dedicated database where we can document how Hindu women are being tortured and converted on a हुँ, regular basis, how Hindu women are being murdered. At some point of time, I would like to also create an organization which lobbies for Hindus, much like the Jewish community has. Op India would like to get into other sort of content management, for example, a policy website where we can lobby for policy decisions. For example, only yesterday I was talking about how we need a Hindu genocide denial law. And only हुँ, if we start talking about it seriously, only if we start talking about it as a policy, the contours of the policy, the challenges that the policy will face, etc., maybe 10 years, 15 years, 20 years down the line, we could see it as a potential reality. That's how the Overton window shifts. So we are not about to change what our core is. We will keep talking about Hindus. We will keep talking about the हुँ, persecution of Hindus. But in that direction, much more needs to be done. Op India is just scratching the surface. और शायद और बहुत कुछ करना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाया है बिकॉज बहुत जल्दी ये हमारी ग्रोथ हुई है। 5 years इज अ वेरी जी, शॉर्ट टाइम to राइट। grow from a blog to a full-fledged website, because of whom now Guardian had to fire Aina Khan because of her राइट। fallacious reportage of Leicester. So इसीलिए मैंने we, फायर ब्रांड लिखा अपने ट्वीट में, इसीलिए आई यूज़ द वर्ड फायर ब्रांड। जी, thank you. प्लीज़। But maybe I'm also reeling from the whirlwind that has been the past 5 years. So a lot has to be done. A lot has to be done to document the atrocities against Hindus, whether they are historical genocides, whether they are books on ongoing genocides, whether it's talking at a policy level for Hindus, whether it's lobbying for Hindus at a policy level, at a government level, all of that. So there's a lot of scope for all of us at Op हुँ, India. Hopefully, also better collaborations with fellow um, YouTubers, fellow news portals like Hindu Post, Swarajya, and the N number of news portals now that we have. Better collaboration to work better. But I think my personal focus would always be documenting the plight of Hindus, past, present, and future, far better and far more extensive. documenting the plight of Hindus like you did in the case of Delhi riots, right? I hope so. I hope so. I जी, keep saying I feel like we are documenting our own end on on a daily basis. It's my job to be skeptical, so I am going to be a pessimist and say I feel like we are documenting our own end. But my aim is to document it better and to document it हुँ, far more extensively. ग्रेट।
ग्रेट। थैंक यू वेरी मच नुपुर, आपने समय निकाला, हमारे साथ आए, आप हमारे साथ बात की, लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इस टाइप के जो पॉडकास्ट हैं वो बेसिकली इसीलिए ज़रूरी होते हैं कि यू नो एक एक ऑल्टर, बिकॉज दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत एम्पलीफाई होता है। एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू जिसको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं वो एम्पलीफाई होना चाहिए। एंड पीपल शुड नो कि किस प्रकार से ये इट इट इज नॉट अ खाला का घर जिसको बोल दिया जाता है। इट इज एक बहुत सीरियस जॉब है जिसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, ट्रोलिंग होती है। उसके बावजूद देयर इज लाइक एक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पैसा है या फिर दिस इज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन थिंग जिसमें आपको कुछ घर चलाने के लिए पैसा मिल जाता है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। सो वो स्ट्रगल जो है वो लोगों तक पहुंचानी और जाननी बहुत जरूरी थी। तो थैंक यू वेरी मच नुपुर, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। पार्टिंग वर्ड्स यदि आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से, उसके बाद हम इस ब्रॉडकास्ट को बंद कर सकते हैं। पार्टिंग वर्ड्स। My parting word only is that if you don't want me to repeat ad nauseum that we are documenting our own end, then please start talking about the core of the problems that we have. Don't talk about the riffraff. Don't talk about what other people want you to talk about. कश्मीर को राइट। वो बोलेंगे टेरिटोरियल प्रॉब्लम है, लेकिन है वो इस्लाम का प्रॉब्लम। तो आप कोर इश्यूज की बात करिए, कोर आइडियोलॉजी जी। के लिए बात करिए, एंड बी केयरफुल. Don't put yourself in trouble while talking about these issues, but talk about these issues nonetheless. Because राइट। every Hindu that you manage to awaken is one enemy less. And that's the बिल्कुल। only job that we have today. थैंक यू, थैंक यू। बी अवेकन, यूज राइट वर्ड्स, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और आर्गुमेंट कीजिए, अपने आर्गुमेंट को रखिए। These are the parting words from Nupur. Thank you very much, Nupur, आपने समय निकाला। थैंक यू।